Welcome back to Learning Partner. So up till now, we have completed control flow statement. So like at the rate if, at the rate for, at the rate switch, how we can use it. Structural directory is also done. Routing is also done. Now we are going to see an easy topic, that is pipe. If we see, pipe is an easy topic, but it is mostly used because if we compare with React.js, we don't have something in React.js, but in Angular, we have something that we can use to format the data, because in React, we have to write custom code to format the data. But in Angular, we have something default, which we can use to format the data before displaying it on the template. So that is nothing but pipe. So pipe is basically used to format the data in the HTML. It is mainly concerned with the HTML template. It's not mostly using the .ts. Mostly it is dealt with the HTML template to format the data. Okay. Now we are going to see what are the different, some pipes are default by provided by the Angular, and we can create our own custom pipes also. So let's see in detail. Now in the pipe, we have to create some variables. So here, let's say I'm creating first name, data type string. I'm storing Angular, everything in small case. Okay. Now just the basic pipe I'm explaining. So we, in the first name variable, we have Angular over here. Now let me just zoom a little bit. So now we have created a variable which is having name first name, and in that we have stored Angular. Now if this variable I want to display in my HTML template, okay, so this is the original value. Let's print it over here. And over here, what I need to do, I need to capitalize all the letters. Whatever the letters I have in this variable, I need to capitalize them. So I can use pipe symbol. This is the straight line. Just you can press the shift, and up below the backspace, you will have one button that is forward slash. So after shift using, you can use this line. Now here I want to capitalize all the letters while displaying. So what I can do, uppercase. But from Angular 17, previously what we used to do, pipes were globally available. But now from Angular 17, if you have to use a pipe now, you need to import it. So in .ts, you have the import section. So here you need to import it. Sorry, we need to import uppercase pipe. So you can see it is suggesting uppercase pipe. So now I can use it. Wait, uppercase. So now let's save and check. So you can see original value, we have printed it over here. And after adding the pipe, let's see the output. So here you can see original value is small case Angular, but after pipe, you can see every letter is capital now. Correct? Now, instead of this, let's make the first letter as capital over here. Now, original letter over here. Just like uppercase, we have one more pipe, that is lowercase pipe. See, whatever the imports we have to add, you need to add it over here. Just like uppercase, we have lowercase. Let's save. So now you can see in original value, we have A as capital, but after adding the lowercase, you can see A also got small case. Just like that, we have a title pipe also. So title pipe as in it will just, and now in this variable, this is a demo session. Let's say your requirement is every character from the from your sentence, from your word, first character you need to capitalize. Okay. So let's try that now. This is original value. Now I have to capitalize all the first character from this sentence. So I have to use title case pipe. Okay. And now here I will use title case. So let's save and check. So now you can see every word is small over here. But if you see, T is capital, I is capital, A is capital, D. Every letter from the word, first letter, it has make that capital, right? So this is a very basic pipe. Just like this, we have date also, right? So let's create a variable first. Current date, colon date is equal to new date. Let's try to get the current date. Now, if this date, I try to print it over here. Let's use the date in the next line.
Let's save and check what data you get in this date pipe, in this particular variable. Let's check it. So see over here, what we have got up till this date also we have got, time also we have got, time zone also we have got. But let's say you don't need to display anything. You just need to display the date. So now here pipes come handy. So let's say you just need to display the date. So what you can do, date pipe you need to import. Date pipe. Okay, it is in capital case. Now on this variable, what I can do, I can simply use the date. So by just adding this, see what happens. See, this is the original value, but after adding the pipe, what you got, just the date. It has removed the time and the time zone, everything. Now it is showing like June 5, 2024. What if you have to format this also? Okay, so now let's add it over here. This is by default date pipe. But for this div, you can send the format also, like in which format you need to display the date. So after that, after the pipe, you need to add colon, then single quote, and you can pass the proper format. So let's say dd hyphen mm hyphen. Let's say you just need the two words, two ending year yy. So see what happens. So 5/8/24. Okay. So just like that. Let's try over here only. And in the first year, instead of YY, I will pass 4YY. So it will show the complete year. See here, complete year it is showing. And here just the two letter. What if I need the month name? So here, instead of I will use MMM 3 times. Where it is? Yeah. So here you can see 05 June we have got. If you use 2M, sorry, it should be capital only. I forgot that. M should be always in the capital. If you use 2 it will show the number. But if you use 3 it will show the name of that particular month. So this is like, now we have added a slash also. Just like slash, you can add the hyphen also. Based on whatever you need, you can add that. Slash. So see, now it will display the slash. Right? So this is how you can format the data by using pipe. If you consider the React or Vue.js, now you have to write custom code to output like this. But in Angular, we have pipes, so we can use that pipe to format the data. Now let me show you like what are the different pipes we have again. Date pipe we have seen lowercase, uppercase. Currency pipe is also there. If you have to show dollar, rupee symbol, point value, decimal pipe is also there, percent pipe is also there. Now these are very basic pipe up till here. Now actual useful and kind of a tricky are JSON pipe and the ASIC pipe. So let's see this first. First, I will show you the importance of JSON pipe. Remaining are very easy. Okay, so I'm not going to cover this. You can just go through and you can implement it. JSON pipe and the async pipes are a little bit tricky, so that I will showcase. Now, let's say over here I have created a student object, colon any name something. Let's say I will give it my name, city, Pune, EMP ID, let's say. Okay, so what I have created an object. Now, if I try to print this object directly, let's open a new row again. If I try to print the object over here directly, my object, whatever the object student is there, let's try to print it. Let's see what happens. So here you can see it has printed object. So as we know, object, we cannot directly print it into the template because it has a key value pair data. So obviously we normally print the data by using object.property name, right? But what if you are debugging and you need to see what properties you are getting, right? There are so many scenarios while debugging only. See, this JSON pipe is only for us, for developer only. It's not in the application. Actually, we don't use it, but it is for us to check what data we have in the object. Okay, so now I can use the JSON pipe. So let's add a JSON pipe over here first. JSON pipe. Now, if I add a JSON over here, so now you will be able to see the value. See, this is without pipe.
And if you add a JSON pipe, you can see the actual whatever the data we have in that particular object. So what it does, JSON pipe, it will actually convert the object into string format, right? So if it is something in the string format, obviously it will display. So this is, we can display the object in HTML template by using pipe. So here, like interviewer will try to confuse you because in pipe, we don't have any as many question, or this is not an interview topic, but still someone will ask you. So they will try to ask you vice versa, like how do you print the object? Then you have to explain like by using JSON pipe, we can print the object. Okay. So this is the JSON pipe. Now we will create an observable. I want to show you the async pipe. Now here, what I'm going to do is like current current time. Current time. This is just a variable, but in this variable, I'm going to store an observable type of data. Now, those who don't know observable, just wait for some sessions. Once we move to the RxJS now, this will get more clear. But for now, just pay attention what I'm explaining. How do we do observable string? So what I have created, it is just an observable data we have created. Now I'm going to create constructor round bracket, curly bracket. Now in this constructor, I'm going to add a set interval. Okay. Set interval is a method which gets called after particular interval of time. And we will execute this set interval after every, let's say 5 seconds. So 5,000. Now, what I have to do in this variable, I will be storing current time. So current time is equal to date time. Sorry, what we need to do, we need to subscribe, right? How we can do that? This dot current time dot let me just search it properly. So see what I have done. Instead of string, I have converted it to date type of data. Okay, so current time data type will be date, and I have initialized that also. Now in constructor, what I'm doing to this observable, I'm assigning the value interval again, just like set timeout. We have something interval from RxJS. So here you can see I have added the input also. So from interval, it's like for after every 1 second, it will trigger, and we are mapping the we are using pipe operator and then map, and we are getting the new date, and this new date actually we are going to assign to this observable. So now we have an observable in the .ts. Okay. Now this observable we are trying to subscribe into HTML. So this current type, let me just copy, paste. Now this current type, I will try to print it over here and over here also. But here I will use the async pipe. So let's import the async pipe. This is not the ideal, what we can say, scenario to use async pipe. We normally do it with the API call, but unless we are not done with API yet. So that's why I'm taking this example. And here we have to use async pipe. Let's save and check now. So now here, obviously it has printed object because we cannot, observable is nothing but an object. So we cannot print the object. But now here you can see this timing is there. See, after every 1 second, that observable is emitting value, and we are on the HTML template, we are actually subscribing it. So you can see timer is increasing. So this is possible because whatever this current time is emitting, this is observable. It is emitting the value after every 1 second. And in HTML, we are subscribing to it. That is because of async pipe. So async pipe subscribe to the observable. Whenever we have to display the value which is there in observable, indirectly HTML, we can make use of the async pipe. So JSON pipe to print the object, and async pipe to subscribe to the observable in the HTML. Rather than subscribing in the .ts and storing into another variable, we are directly subscribing that value over here.
Now here you can see we have got the complete pipe. Now one more topic, like we can add another pipe also. Date colon, I'm adding HH. I want to display just the time. So HH, hour, minute, second. Let's say if we are able to show the time only. Yeah, so here you can see only time is visible. So this is like called multiple pipes, chaining of pipe. So on the single variable, you can see we have added async pipe also, and then date pipe also. Order of execution will be from left to right. So first this pipe will execute whatever the data we get after after the operation of async pipe, then it will add the date pipe. So we can add multiple pipe also, and the order of execution will be from left to right. Okay. So this is everything with the default. Now, what if I have to create my own custom pipe? So there in actual industrial project, there are so many requirements where we have to create our custom pipe. So let's try to create a custom pipe. Oh, sorry, I totally started in English only. Okay, so pipe क्यों हम यूज करते हैं, तो डेटा फॉर्मेट करने के लिए. ओके, सो डेटा फॉर्मेट करने के लिए कुछ डिफॉल्ट पाइप है, जैसे अपर केस, लोअर केस, डेट पाइप. डेट पाइप को हम कुछ फॉर्मेट भी भेज सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको चाहिए. जैसे देखो यहाँ पे मैंने स्लैश भेजा, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश भेजा, राइट. ऐसे आप कुछ भी डेटा भेज सकते हो. उसके बाद जेसॉन पाइप. जेसॉन पाइप ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली एचटीएमएल में प्रिंट नहीं कर सकते, राइट. बट अगर हमें ऑब्जेक्ट एचटीएमएल में दिखाना है तो हम कौन सा पाइप यूज करेंगे, जेसॉन पाइप. ये सिर्फ हमारे लिए है, डेवलपर के लिए. जस्ट हमें वैल्यू देखना है, कुछ एपीआई कॉल से क्या डेटा आ रहा है वो अगर हमें देखना है, तो यहाँ पे हम जेसन पाइप यूज करके डेटा दिखा सकते हैं. उसके बाद एक्चुअल जो हार्ड टॉपिक है वो है असिंक पाइप. सो असिंक पाइप, अब जिनको ऑब्जर्वेबल पता नहीं है, सो वेट फॉर सम एपिसोड. वंस वी स्टार्ट विद द एपीआई कॉल, देन आई विल एक्सप्लेन कि ऑब्जर्वेबल क्या है. ऑब्जर्वेबल इज काइंड ऑफ अ कॉल बैक बेस्ड प्रोग्रामिंग. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया, उसको डेटा टाइप क्या दिया था हमने, डेट के साथ. ओके, और कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, इस ऑब्जर्वेबल को हमने इंटरवल पास किया और 1000. सो ये क्या करेगा, आफ्टर एवरी 1 सेकंड ये एग्जीक्यूट होगा, और हम क्या असाइन कर रहे हैं, न्यू डेट. यू कैन सी न्यू डेट हम असाइन कर रहे हैं. सो हर 1 सेकंड बाद ये क्या करेगा, नया डेट एमिट करेगा, और उसको हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं. सी, ओके. हम ऐसे नए मल्टीपल पाइप भी एक एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल पाइप लगाए, असिंक पाइप भी लगाया और डेट पाइप भी लगाया. ऐसे और भी पाइप लगा सकते हो. ओके, नाउ ये थे डिफॉल्ट पाइप. अगर मुझे खुद का पाइप बनाना है, कस्टम पाइप, हम कस्टम पाइप भी बना सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट अ कस्टम पाइप. सो अभी कंपोनेंट फोल्डर है ना, ऐप फोल्डर के अंदर में फिर एक फोल्डर बना रहा हूँ पाइप्स नाम का. यहाँ पे मैं नया टर्मिनल ओपन करूंगा. अब मुझे पाइप क्रिएट करना है. सो पाइप क्रिएट करने के लिए कमांड है ng जनरेट पाइप. पाइप का नाम लेट से मैं na नाम का पाइप दे रहा हूँ. सिंपल सिनेरियो ले रहा हूँ सो दैट यू कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड. ओके, na मतलब नॉट अवेलेबल कंसिडर करो. ये नॉर्मली इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में ये एक पाइप होता ही है, जहाँ पे अपने को वैल्यू चेक करना है, नल है कि नहीं, अनडिफाइन है कि नहीं, एम्प्टी है कि नहीं, तो ही वैल्यू दिखाओ, अदरवाइज कुछ तो भी दिखाओ. ओके, सो देखो हमने पाइप क्रिएट करने के बाद ये ऐसा एक फंक्शन क्रिएट होता है. ओके, अब पाइप में हमेशा एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है, जिसको 2 पैरामीटर होंगे, वैल्यू और एक्स्ट्रा पैरामीटर कुछ है तो वो. ओके, अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइप में कौन सा फंक्शन होता है. सो पाइप में ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है. नाम से समझ में आता है कि जो भी वैल्यू आएगी ना उसे वो ट्रांसफॉर्म करेगा और नई वैल्यू भेजेगा. ओके, अब ये ये पाइप का काम क्या है कि लेट से किसी वेरिएबल को मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, और उस वेरिएबल में मुझे चेक करना है कि डेटा डेटा क्या हो सकता है. एटलीस्ट एक तो डेटा नल हो सकता है, अनडिफाइन हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है. ये अगर 3 नहीं है तो मेरा एक्चुअल डेटा होगा. अगर नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो मेरा डेटा दिखेगा. बट अगर नल है, अनडिफाइंड है और एम्प्टी है, इन तीनों में से कुछ भी है, तो मुझे एनए प्रिंट करना है. ओके, सब उसका कोड लिखता हूँ मैं. सो यहाँ पे सिंपली इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू नल एंड वैल्यू not equal to undefined and value not equal to empty. ओके, अगर ये तीनों नहीं है, मतलब नल भी नहीं है, अनडिफाइंड भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू आई है ना वो रिटर्न कर दूंगा एज इट इज.
ओके। बट अगर तीनों में से एक भी है, आइदर नल है और अनडिफाइन और एम्प्टी है, तो वो जाएगा एल्स में। ठीक है। और एल्स में मैं क्या करूंगा, एन ए प्रिंट करूंगा, यहां से मैं भेजूंगा एन ए, मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यू। ठीक है। अब ये मैंने मेरा पाइप, कस्टम पाइप क्रिएट किया। अब इस पाइप को मैं HTML में यूज करूंगा। मेरे पाइप का नाम क्या है, एन ए। सो जैसे ये आप जेसॉन लोअर केस था ना, ये नथिंग बट पाइप है, बट ये एंगुलर टीम ने ऑलरेडी क्रिएट की हुए है। ये अब हमारा खुद का पाइप है। सो ये एन ए पाइप है। अब ये पाइप अगर मुझे ये पाइप कंपोनेंट में यूज करना है तो ऑब्वियसली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फिर से पाइप के डॉट टीएस में मुझे एन ए पाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो जैसे बाकी पाइप इंपोर्ट किए थे ना, वैसे ही मुझे एन ए पाइप भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो एन ए पाइप इंपोर्ट किया मैंने। अब इसके HTML में लेट्स से एक अरे, या फिर यहीं पे ऑब्जेक्ट में ही वैल्यू प्रिंट करते हैं, सिटी कोलन एम्प्टी। ठीक है। सिटी ऑलरेडी है अपने पास, स्टेट करते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट में कि ये प्रॉपर्टी प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। कॉपी पेस्ट स्टूडेंट डॉट स्टेट। ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब इसके बाद ये लेट्स सेव एंड चेक नो। अब इस स्टूडेंट के स्टेट में क्या है, एम्प्टी है वैल्यू। सो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके। बट दैट डजंट लुक गुड कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ अगर एपीआई साइड से, ये नॉर्मली हम एपीआई के साथ करते हैं। सो एपीआई साइड से अगर फॉर लूप में हमने टेबल में दिखा है, टेबल में कुछ वैल्यू नहीं आई है, एम्प्टी आई है, अनडिफाइन है, तो वहाँ पे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। लेट्स से हाइफन हाइपर या नॉट अवेलेबल, कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा कि ताकि यूजर को पता चले कि वैल्यू आई नहीं है एपीआई साइड से। सो अब मैं ये एन ए पाइप यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, एन ए। ठीक है। अभी देखो, अभी मेरा स्टेट क्या है, एम्प्टी है, तो देखो एन ए दिख रहा है। अगर मैंने स्टेट में वैल्यू दिया एम एच, तो अभी एन ए नहीं दिखेगा, वैल्यू दिखेगी। देखो एम एच दिखा, वैल्यू है ना। वैल्यू अगर है, अगर वैल्यू नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो वैल्यू एज इट इज प्रिंट करेगा। बट अगर नल है या अनडिफाइंड और एम्प्टी है, तो वो एन ए प्रिंट करेगा। सो अभी इसको मैं नल असाइन करता हूँ, तीनों पॉसिबल सिनेरियो दिखा देता हूँ। देखो नल है तो भी एन ए आया, और अनडिफाइंड रख सकते हैं तो भी मेरा एन ए प्रिंट होगा। राइट। सो ये हमारा कस्टम पाइप भी हो गया इसी के साथ। एक्चुअल प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो होते हैं, डेट रिलेटेड बोलो। हम जो फाइल अपलोड करते हैं वो नॉर्मली, अगर AWS है तो S3 बकेट में करते हैं, Azure है तो ब्लॉग में करते हो, तो फाइल का एक यूनिक नेम जनरेट होकर आता है, लेकिन वो यूनिक नेम हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सो वो यूनिक नेम रिमूव करके एक्चुअल फाइल नेम दिखाने का भी पाइप हम क्रिएट करते हैं। सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, बहुत सारे पाइप होते हैं। ओके। बट जस्ट एक इनिशियल पर्पस पे मैं ये एक सिंपल एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया हो कि पाइप कैसे क्रिएट होता है। ये लॉजिक आपका कुछ भी रहेगा। ओके। So that's it with this current video. If you are new, please do like and subscribe.